So this is the question number 4 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, four option has been given to you and it has been asked which of the following option is not correct. So if we see the first option say if we try to read a text file that does not exist, a particular error occur. If we try to read a text file that does not exist, the file gets created. Or if we try to write on a text file that does not exist, no error occurs. If we try to write on a text file that does not exist, the file gets created. So in order to answer this question, first of all, we should be aware how to open a file in text file, how to open a file in Python, and what will happen if file does not exist and we try to open in read mode or W mode. Okay. So first, in order to open a file, first of all, there is a particular syntax that one needs to follow. We need to use open function, and in this open function we have two parameters. First one is file name, another one is access mode. So file name basically in this case it will be .txt because we are trying to read a text file, and access mode से basically कि किस मोड में हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं. मोड का मतलब क्या है बेसिकली कि उसे हम रीडिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं, अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हैं या राइटिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं. नाउ वी नीड टू पर्टिकुलरली रिमेंबर द केस कि उस केस में क्या होगा जब हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती. तो आई सजेस्ट यू टू टेक ए मोमेंट ऑफ दिस एंड ट्राई टू टेक ए नोट ऑफ इट. ये टेबल आप अपने पास बना लीजिए सो दैट you will have a better idea whenever this kind of question comes into your syllabus or your in your upcoming exams. Okay, so basically we have three major modes. First one is read mode. Okay, read mode के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो it will give you error. In append or W mode, if file does not exist, they will create a new file. You should also aware what will happen when file exists. अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो रीड मोड के अंदर क्या होगा वो फाइल ओपन हो जाएगी और जो फाइल का हैंडलर है यानी जो फाइल का ऑफसेट है दैट ऑफसेट विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. ओके, एंड इन अपेंड मोड फाइल क्या होगी ओपन हो जाएगी और जो फाइल का हैंडलर है वो कहाँ हो जाएगा आपका एंड ऑफ द फाइल. बट इन द राइट मोड अगर कोई फाइल आप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा जो पुराना कंटेंट है उस फाइल का वो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा वाइप आउट हो जाएगा और ऑफसेट कहाँ चला जाएगा आपका फिर से बिगिनिंग ऑफ द फाइल में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए. अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो इट इज जनरली नॉट एडवाइजेबल टू ओपन ए फाइल इन राइट मोड बिकॉज इट माइट हैपन कि वो फाइल जो आप ओपन करना चाह रहे हो राइट मोड में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो. अगर इनकेस आपने राइट मोड में ओपन करा उस फाइल को तो वो पुराना कंटेंट क्या होगा सारा का सारा चला जाएगा आपका. ओके, सो नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन. इफ यू सी अगर आप टेबल देखोगे तो अगर हम फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहें और वो एग्जिस्ट ना करती हो तो इट विल गिव अस एरर. ओके, आई सपोज अगर आपको नहीं भी आता है क्वेश्चन तो इफ यू सी द स्टार्टिंग टू स्टेटमेंट्स so those two statements are contradicting in nature. That means if one gets true, another will be definitely false. That means अगर जैसे आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ कि अगर हम ट्राई करें रीड करने को टेक्स्ट फाइल को जो एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर अकर. एंड इन ऑप्शन बी इट हैज बीन गिवन फाइल्स गेट क्रिएटेड. तो बोथ द ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू. Either one is true or B should be false. तो both the statements are contradicting in nature. That means out of A and B हमारा कोई ना एक ही ऑप्शन कोई सा सही होगा. तो इन केस इवन यू डोंट रिमेंबर ऑल दोस थिंग आपको क्या हो रहेगा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया. यू गेट टू नो कि विच इज नॉट करेक्ट कि अगर हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करना चाहें जो एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल कौन सी हो जाएगी क्रिएट हो जाएगी. ये ऑप्शन क्या है हमारा इनकरेक्ट है. बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आई होप यू गॉट द आइडिया. बेसिकली जब व्हेन वी ट्राई टू ओपन ए फाइल इन पर्टिकुलर एक्सेस मोड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होता है और एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स. I suggest you to take a note of it because it will comes handy for your when you're trying to revise yours for your upcoming exams. Okay, so that's it for the day. I hope you learned something new.